हेलो एंड वेलकम गाइस टू लैंग्वेज स्पेस। माय नेम इज़ इमरान और आज हम अपने 5वें वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाएंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसमें सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके हमने दो जगह पढ़ी थी, एक नाउ और दूसरा नाउ अराउंड। अब जो तीसरी जगह हम यूज़ करते हैं इस टेंस को, वो है हमारा ट्रेंड। सो ट्रेंड इज द थर्ड प्लेस जहां पे हम इसको यूज करते हैं। ट्रेंड बेसिकली कहा जाता है कोई ऐसी चीज जो हमारे आसपास में हो रही हो कंटिन्यूअसली। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पोल्यूशन लेवल्स of our city are increasing। हमारी सिटी के पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है जिस टाइम हम ये बात करें उस टाइम ना बढ़ रहे हों, ओके, बट इन जनरल अराउंड दैट टाइम स्पैन बढ़ रहे हैं। नाउ टू दिस इज अ ट्रेंड। नाउ टू रिप्रेजेंट दिस ट्रेंड we use our present continuous tense. Second example, the prices of petrol are increasing। अगर हम किसी से ये डिस्कस करें कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है जिस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे ना बढ़ रहे हैं, बट अराउंड दैट टाइम स्पेन बढ़ रहे हैं। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल। द शेयर्स ऑफ XYZ company are selling at low rate। Now all this is happening around the time when we are discussing them। उस टाइम पे हो सकता है ना हो रही हैं जब हम डिस्कस करें, बट एट दैट टाइम अराउंड हो रही हैं। ऑलराइट, टेक अनदर एग्जांपल। द प्राइसेस ऑफ essential commodities are increasing। सो ये भी एक ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है जिस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे ना बढ़ रही हो, बट एट दैट टाइम अराउंड बढ़ रही हैं। सो इस ट्रेंड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ प्लेस where we can use this kind of tense, this present continuous tense, is to represent something which is temporary। कोई ऐसी चीज़ को represent करने के लिए जो temporary हो, अभी हो रही हो सकता है कुछ टाइम के बाद ना हो, ऐसी चीज़ों को represent इसी tense में किया जाता है। For example, you are watching माई वीडियो। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहे हो सकता है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप कुछ और काम कर रहे हो। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेम्पररीली। ओके, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी, और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। टेक अनदर एग्जाम्पल। शी इज going for a walk। okay, she is going for a walk। so walk के लिए जा रही है, वो अभी जा रही है,
कुछ टाइम के बाद उसके ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, जाने का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा. नाउ दिस इज टेम्पररी. टेक अनदर एग्जाम्पल. आई एम राइटिंग माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. हो सकता है मैं अभी कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये टेम्पररी टाइम है. जब मेरा होमवर्क खत्म हो जाएगा मैं कुछ और काम कर लूँगा. आई मे गो आउट टू प्ले, राइट, और आई मे ईट समथिंग, आई मे हैव माई लंच, आई मे हैव माई डिनर, बट अभी के लिए फॉर नाउ आई एम राइटिंग. सो दिस इज टेम्पररी एक्शंस, और इन टेम्पररी एक्शंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. फिफ्थ प्लेस जहाँ पे हम अपनी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ टू शो द फ्यूचर, एनी एक्शन विच इज़ गोना हैपन इन फ्यूचर. नाउ मे बी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो है तो प्रेजेंट टेंस, अब फ्यूचर इसमें कैसे आ गया? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट future using a present tense? So we can using the present continuous tense, but इसमें एक थोड़ी सी चीज़ हमें ऐड करनी है या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, जिसकी हेल्प से हम इसमें फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. मार्था is resigning from her job next week. Okay, so Martha is resigning from her job next week. She's working with the company right now. All right, but she's going to resign. She'll resign next week. She hasn't resigned yet, but she's going to resign next week. Now, if I say Martha is resigning, it means she's resigning right now. But when I add this timestamp next week to it, it depicts the future. Future इसमें दिखाया जाता है. All right. Take another example. I am going to Ladakh next month. I'm going to Ladakh next month. मैं अगले महीने लद्दाख जा रहा हूँ. So I am going to Ladakh. मैं लद्दाख जा रहा हूँ. It's a different thing, but next month depicts the future. Next month से पता चल जाता है action hasn't started yet, it hasn't happened yet, it'll happen in future. Take another example. She is performing in school function tomorrow. So tomorrow is the school function. It's not today. All right, it hasn't happened yet. The school function is tomorrow and she's participating in that and she will perform tomorrow. So she's performing tomorrow. So this also depicts the future. इसमें भी future depict किया जा रहा है कि कल perform कर रही है. Okay, so by adding this timestamp tomorrow, हम इस present continuous tense से future को represent कर सकते हैं. Fifth place जहाँ पे हम अपने इस present continuous tense को use कर सकते हैं, it is to show some repeated actions. Repeated actions. And ये repeated actions mostly negative sense में use होते हैं. Okay? हमेशा negative senses में ही use होते हैं ये repeated actions.
For example, they are making noise every time. वो हमेशा शोर मचाते हैं. Okay? So this is a negative sense. To represent this negative sense, हम ये use करते हैं. Take another example. They are hurting each other these days. They are hurting each other these days. आजकल वो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं. Alright? They are fighting about dash dash. Okay? किसी चीज़ के बारे में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं. Okay? So these are the repeated actions they make every time these days. So in repeated actions को भी हम present continuous tense में ही represent करते हैं. Now, अब हमने ये चीज़ें तो देख ली कि हम इस present tense को कहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी real life में. But कुछ situations ऐसी हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं but हमें करना नहीं चाहिए. अब हम उन चीज़ों को देखते हैं जिन चीज़ों में हमें इस present continuous का यूज़ नहीं करना चाहिए. So the first place जहाँ पे हमें ये present continuous tense use नहीं करना चाहिए, it is to represent something which is permanent. एक ऐसी चीज़ जो permanent हो. Okay? For example, I am working in a pharma company. Now, I am working, मैं एक फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ. Okay? So, if I am working, if I am doing a job in the company, it may not be temporary. ये temporary नहीं हो सकता because I'm not sure when I'm going to leave that job. I may stay with that job for some time now. Okay? So, इसीलिए हम I am working का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे. So, if I'm using this sentence, I am working, it's totally wrong. गलत है. हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. I work in a pharma company. Alright? Next, अगर मैं ये कहूँ I am living in Baramulla. So यहाँ पे मैं बारामूला में रह रहा हूँ. कहने को लग तो ठीक रहा है, but it is not. It is wrong. Because if I live in Baramulla, so it's not temporary. ये temporary नहीं है. मैं रह रहा हूँ बारामूला और कुछ time के लिए रहूँगा. Okay? I'm not sure of that. It is something which is permanent for now. Present continuous को temporary चीज़ों के लिए ही use किया जाता है. So living somewhere is a permanent thing. So I may stay in a hotel temporarily. Say for example, I'm staying at a hotel. So hotel stay temporary होता है. उसको represent कर सकते हैं हम present continuous में. But living somewhere is not temporary. Okay, living somewhere is permanent
for some time. So that is why I should say I live in Baramulla. इसलिए मुझे यही कहना चाहिए, I live in Baramulla, not I am living in Baramulla. ये गलत हो जाएगा. Okay, so that's the first place where we should not use it. दूसरी चीज़ जहाँ पे हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, इट इज़ टू रिप्रेजेंट verbs that are stative or simply stative verbs. Alright, stative verbs को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते.